welcome everyone. Hope you're having a good evening. I know it's a Friday night and everyone has tuned in. And obviously, as you can see on the screen, we are with Indie Cop, aka Nitika. And obviously, you know her from her channel on YouTube, and obviously a massive subscriber list already just growing. And obviously, she deserves all that is going her way. And Thank you. her link to the channel is given in the description, so obviously do subscribe to her channel, and at the same time don't forget to follow us on our social media and subscribe to our channel. So Nitika, welcome back. I think it's been a long time since you have been, और जो पहला episode आए थे, it was like the fortunes of Liverpool were completely different that time. So तो इतना so लेट what क्यों do you बुलाया say दैट on that? ये टाइम देखना पड़ रहा है लिवरपूल को. दैट्स नॉट फेयर. but like just talking on that, like you can see a different Liverpool in the Champions League, a different Liverpool in the Premier League. Like what's the reason for that? Because Champions League, it's like they are one of the contenders to win it also at times, but in the Premier League by top 10 finish कर लिया तो बड़ी बात है. It's like that. आई थिंक दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग दिस सीजन कि कौन सा लिवरपूल मैदान में उतरेगा खेलने के लिए. इज इट गोइंग टू बी द मेंटालिटी मॉन्स्टर्स और इज इट गोइंग टू बी द वो डरा हुआ टीम जो आजकल हमको देखने को मिलता है कि दिस इज हाउ दे आर प्लेइंग. बट आई डोंट नो व्हाई यार, कॉल मी whatever, but when it comes to Champions League matches, आई एम नॉट सेइंग कि हम हर सारी जीत रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट, बट आई फील अ लिटिल कॉन्फिडेंट व्हेन Yeah. इट कम्स टू दैट. क्योंकि प्रीमियर लीग का ट्रॉफी हमने 30 साल बाद जीता है. तो जब भी प्रीमियर लीग के मैचेस होते हैं या हमारा एक होता है ना कि रेस में अगर दौड़े हैं तो फिनिश कर पाएंगे कि नहीं, वो जो चीज है ना, वो मेरे को थोड़ा लगता है प्रीमियर लीग में ना हमको थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा, जो कि हमको मैनचेस्टर सिटी Yeah. जैसे टीम से सीखना चाहिए. बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग नाउ एंड यू कांट जस्ट ऑलवेज पुट इट ऑन द मनी. ऑब्वियसली दे हैव दैट कुशन, दे हैव दैट बैकअप कि अगर उनको कोई प्लेयर चाहिए वो लेके आ पाएंगे. बट टू provide that sort of winning mentality year after year, I think we need to learn that from them. But you can't blame on the players or maybe the manager even now, because I feel कहीं ना वो चीज है. देखो पिछले सीजन में वी वर द कंटेंडर्स फॉर एवरी ट्रॉफी आउट देयर, एंड यू एज अ चेल्सी फैन आई थिंक यू वुड नो दैट, बिकॉज Yeah. हम दो ट्रॉफीज आपके पास से लेके गए थे. तो दैट हैपेंड, दैट वाज द टीम दुख रहा है, दैट अभी भी वाज. दुख रहा है, but ठीक है. Thanks for कोई bringing बात it नहीं. up. No, I didn't try to, but I thought chalo, let me remember the good old days. But that's what I'm trying to tell you. We were going to go for everything last season, and suddenly वो breaking point आता है and हम matches हारना शुरू करते हैं friendlies में ही. प्री सीजन में ही हम matches हारना शुरू करते हैं, and then उस time पे भी मेरे को थोड़ा लगा कि are we going to bring something new in the season, because it's not like कि दूसरे teams evolve नहीं कर रहे हैं. It's not like दूसरे टीम्स नहीं पढ़ रहे हैं what Jurgen Klopp is trying to do at Liverpool. They are trying to do that, right? तो उनका भी थोड़ा एक चीज रहता है कि यार वो भी इवॉल्व करेंगे, एंड टू द सिस्टम दैट वी प्ले. आई थिंक वो काफी अच्छे से कस्टम हो गए थे उस चीज को लेके. देन आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल हियर. तो यू नो दैट हमारे यहाँ पे सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है यूपीएससी. तो लोग को आईएएस बनने के लिए यूपीएससी का प्रिपरेशन करना पड़ता है. इट्स लाइक बहुत टफ, बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ता है इस चीज को लेके. तो सोचो आपने यूपीएससी का एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, एक साल लगाया, कुछ नहीं देखा, कोई सीरीज शोज कुछ नहीं, यू वर स्टडिंग द इंटायर टाइम एंड यू वर डूइंग वेरी वेरी वेल इन योर मॉक्स, यू वर डूइंग सो वेल इन. तुमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, तुमने मेंस क्लियर कर लिया, तुम इंटरव्यू में रह गए यार, मतलब इंटरव्यू में लास्ट में आकर. देन नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल ओवर अगेन जस्ट टू बिकम आईएएस. आई मीन just imagine that sort of thing that it requires, and I think that's what Premier League is. So वो जो milestone है ना, और वहां तक पहुंचना, what Liverpool did already, भाई मतलब उनको देख के हम भी थक गए थे कि आई नीड सम ब्रेक फ्रॉम नेक्स्ट सीजन, थोड़ा टाइम लो फिर शुरू करते हैं. एंड प्लेयर्स का तो फिर कहाँ ही हम बोल पाते, ऊपर से ट्रांसफर विंडो. Don't get me started But on that. it's that only. Like, see, you mentioned City, the backing they have in terms of money, which Hmm. Liverpool do have because of the club they are, by just that the club is not spending. Or Klopp आके Hmm. बोल के गए कि like he needed some players, especially in midfield. And every year, every Hmm. match, almost every player, that specific player getting injured again and again, especially every match Hmm. because of the football which Liverpool play. They don't Yeah. sit back and hoping that we'll play on the counter or anything. It's their high Hmm. pressing, high attacking, immediate कहाँ switches. कहाँ है, अब कहाँ है अब भी अभी? दिख रहा है प्लेयर्स, उसके लिए प्लेयर्स लगेंगे पिच पे.
But it's that only. Like, do you think that if Liverpool had the backing what City have, or now with Hmm. Chelsea also have, United have, Hmm. Liverpool would be consistent in the Premier League as well? We can say that that is one of the reasons, but कहीं ना कहीं हमारी खुद की stupidity भी है. See, I'm obviously going to blame FSG for this. Obviously, I'm going to do that. But stupidity मैं क्यों बोलूंगी कि जिस सीजन हम चैंपियंस लीग जीते थे, हमने वही टीम कंटिन्यू टाइम एंड टाइम अगेन कि भाई नहीं इसी के साथ खिलाएंगे. तो क्या होता है ना, फेज आउट करने होते हैं प्लेयर्स, ताकि जो तुम्हारे लेजेंड्स हैं क्लब के, जो भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत दिया है क्लब को, वो धीरे धीरे फेज आउट होते रहें. एंड वी डिडंट डू दैट व्हेन देयर वाज परफेक्ट टाइम टू डू इट. हमने उन्हीं लोगों को, उन्हीं प्लेयर्स को मेंटेन करके रखा अभी तक कि नहीं भाई, इनसे भी ना हम पूरा 100% निकाल के रहेंगे ही. लाइक वी मेड श्योर दैट वी आर गोइंग टू डू दैट. बट दैट डिडंट हैपन बिकॉज वो हमको कहीं ना कहीं, अभी हम उसका यही नतीजा देख रहे हैं ना. आप सोचो, अगर सही टाइम पे ऑक्सलेट को बेचा होता, सही टाइम पे कीटा को लेट गो कर दिया होता, नॉट वेटेड फॉर हिज परफेक्ट सीजन, कि यार आएगा वो दिन, आएगा जब कीटा वर्क करेगा एंड ही विल नॉट बी इंजर्ड एंड ही प्रोड्यूस सम मैजिकल मोमेंट्स ऑन द पिच. ये चीजें नहीं हो रही हैं हमारे साथ. इवन इन दिस सीजन आई विल से कि ठीक है, वी डिड नॉट स्टार्ट द सीजन वेल, बट जब हम हमको ना एक फुटिंग मिल गया था इन 4-4-2 और 4-4 में जब हम खेलने लग गए थे, तो उस Hmm. टाइम पे क्या हुआ, डियाज एंड जोटा इंजर्ड हो गए एंड दैट वाज अ बिग ब्लो टू अस यार, बहुत बड़ा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमारा डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा था, वो तो प्रॉब्लम था ही, बट आई एम सेइंग जो होता है कि एक एक्स फैक्टर जो मिल रहा था हमको इन द टर्म्स ऑफ अटैक, भी कहीं ना कहीं रह गया. तो कहीं ना वो चीज, जैसे आप बता सकते हो हमारा साल ही नहीं है यार, उस वे में कि हमेशा कुछ ना कुछ इशू आ ही रहा है. पर ब्लेम हम खुद को करेंगे क्योंकि हमने सही टाइम पे ना अच्छे प्लेयर्स लेके आए, ना लेट गो किया प्लेयर्स का जिनको हम कर सकते थे. You spoke about the defense. ठीक है. I mean, अभी defense की बात करें, obviously the one player which stands out not in a good way is Trent Alexander-Arnold. ठीक हम्म. है. Especially ये season. Last हम्म. season Klopp defended कि भाई इससे अच्छा defender तो कोई है नहीं. You all are dumb if you all don't recognize that. And this season, for some reason, it's clear that for like many people are now pointing out that it's not happening. हम्म. क्या लगता है, like क्यों लगता है कि ये हो रहा है ये season? And now the whole defense, like you mentioned, Van Dijk included, have just dropped down massively. Why do हम्म. you think So that is exactly? I want to ask you, how will you rate our defense like in the previous season? What do you think, like the same set of players playing, and how much will you rate them out of 10? And now this season. See, honestly saying, I don't rate City and Liverpool defense much क्योंकि उन लोग का मतलब डिफेंस तो अच्छा ही है, बट द प्रेशर दे पुट इन अटैक, बॉल Hmm. हार्डली कम्स टू द कीपर्स और द डिफेंडर्स. ये Hmm. सीजन आगे से ही कुछ नहीं हो रहा और पीछे तो मतलब दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड अगेन एंड अगेन व्हिच बिकम्स टफ, स्पेशली लाइक इफ यू सी Ederson, the number of clean sheets he's been able to keep is because of the defense in front of him or the attack which hardly gives Hmm. away the ball. Hmm. That, but if you see 1v1, Ederson is not as good as Allison is. Allison इतनी बार बचा है ये season. Like literally he Hmm. has saved two The two most points on consistent player of Liverpool like right now. Yeah. exactly. So you come to know. So generally you don't want your keeper to do too much because आगे के ही देखनी चाहिए. But Hmm. when you see the contrast from last season, this season, I think last season I would have rated them maybe 8 out of 10 maybe, and this Hmm. season maybe 4 or a 5 because Hmm. massively every game everyone has dropped. Plus individual errors every game किसी ना किसी के दिख रहे evidently. Hmm. So See, that's I why I think you think have answered the question yourself, because that's what I'm saying. Since you're talking about Trent and Virgil van Dijk and everybody out there in the defense, I feel that the problem is not just them. It starts way ahead, It starts from the midfield also. It starts from the our forwards also. Because when you are a player of Klopp's team, you will have to attack, you'll have to defend. हमारे लिए एडिसन भी गोल कर देता था when needed, उसके लिए उसकी वजह से हमारा yeah. चैंपियंस लीग आया है हमारी वजह से. So that's what I'm saying. कहीं ना हर प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिफेंसिवली यस, जो मेन काम है वो इन्हीं प्लेयर्स का है, बट आई फील क्लॉप ने कहीं ना कहीं ये ना समझ लिया वो पूरे प्रीमियर लीग या और किसी के डिफेंस को और मे बी उनके टीम को कि यार ये अभी भी ना वो तोड़ नहीं निकाल पाएंगे कि हमारे टीम में ट्रेंड कितना आगे तक मूव करता है एंड देयर इज अ स्पेस दैट्स क्रिएटेड एंड दैट स्पेस इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड टाइम एंड टाइम अगेन. तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू सी ट्रेंड.
आई डोंट थिंक दैट उसमें कोई इशू रहेगा व्हेन यू सी हिम गोइंग फॉरवर्ड। उसके अभी भी क्रॉसेस ब्रिलियंट है, वो अभी भी बहुत सही से फ्री किक्स लेता है, अभी भी वो सेट पीसेस बहुत ढंग से लेता है, अभी भी बहुत अच्छे से प्लेयर्स को ढूंढ लेता है व्हेन नीडेड, अभी भी वो बहुत ढंग से गोल्स हमारे लिए कर देता है, असिस्ट ढूंढ लेता है। ही इज डूइंग ऑल दैट एंड ही वाज डूइंग दैट इन प्रीवियस सीजन एज वेल व्हेन यू गिव देम 8। अभी Yeah, प्रॉब्लम क्या है, अदर टीम्स हैव इवॉल्व्ड विद ट्रेंट, यू नो, एंड ट्रेंट का वो जो स्पेस है ना जो क्रिएट हो रहा है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। वो स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड समबडी फ्रॉम द मिडफील्ड, और मिडफील्ड में जो हमारा हेंडरसन है वो हो गए हैं बूढ़े। तो द इंटेंसिटी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ मिडफील्डर टू yeah, कीप प्रेसिंग, टू नॉट लेट द बॉल कम टू द डिफेंस, ताकि वहां पे हमारा प्रेशर क्रिएट ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी हाई लाइन खेल रहे हैं, ताकि हम ढंग से हाई प्रेसिंग गैगन प्रेसिंग कर पाए। सिंस दैट इज नॉट हैपनिंग, वहां पे एक वॉइड क्रिएट हो गया, सो ऑब्वियसली द स्पेस इज क्रिएटेड। एंड this season we have seen Trent making very questionable decisions when he's one on one with the forward. I think that's why it seems like कि भाई कोई issue है, like this player is not a good defender, because वो जो questionable decisions है वो है lack of confidence which is there in every person of Liverpool right now in the team. I feel there is yeah, nobody that's very confident, and you have seen Trent play in that superior form for very long. तो अगर फॉर्म ड्रॉप हुआ है, वर्जिल वैन डाइक जैसे को भी फॉर्म ड्रॉप हुआ है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं सबका हुआ है। देन यू ब्रिंग इन डार्विन न्यूनियस जिसका पोजीशन ही डिफरेंट है, साला को हम वाइड खिला रहे हैं एकदम, वो सिर्फ फ्लैंक पे ऊपर नीचे हो रहा है। जब साला का इन्वॉल्वमेंट हम बीच में दे नहीं रहे, तो वो जो टेरर फैक्टर आता है फ्रॉम अ प्लेयर लाइक हिम हु हैज बीन योर टॉप गोल स्कोरर सीजन आफ्टर सीजन, वो भी तुमने बंद कर दिया। देयर हैव बीन वेरी कंसेक्यूटिव issues and problems. So that's why I feel that it's not just the defense, but वो काफी prominent है, क्योंकि हम हमेशा पहले गोल कंसीड कर लेते हैं, पहली मोमेंटम डाउन हो जाता है, लीड्स नॉटिंघम से हार जाते हैं, आइक्स नापोली जैसे टीम से जीत जाते हैं, who have been the beast there in Europe. So there are yeah, many set of issues I feel, but you answered that yourself, that the problem lies way ahead rather than just the defense. yeah. I actually relate to you as a Chelsea fan. कि मतलब you'll beat the best of teams, but you'll donate the 3 points to teams in the bottom half or something. डोंट Like, गेट मी स्टार्टेड भाई, रात को 12-12 बजे उठ yeah, के मैच देखो और उसके बाद दे आर डूइंग दिस यार, इनकंसिस्टेंट। मतलब मैं बता रही हूँ वीडियो में इट गेट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। एक मैच में अरे वी आर बैक, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड वी रिकॉर्ड अ वीडियो लाइक दैट कि भाई नाउ नाउ इज द टाइम, इट्स हैपनिंग, इट्स फाइनली हैपनिंग, एंड सडनली yeah. लीड्स के अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, मतलब व्हाट आर यू डूइंग? भाई दैट्स व्हाई अभी देयर इज अ मैचेस लॉट 1:30 बजे होने वाला है। अभी अगर कोई रात को मैच होगा, सब मैचेस 1:30 होने वाला है। सही में That's ठीक है going to be मेरे लिए later. तो। But that यार only, like, so you mentioned ki the age of Henderson and everything, plus Thiago, Fabinho constantly getting injured. Naby Keita, I don't think so. I've actually seen him play 10 matches in a row since he has come to Liverpool. वो कौन सा स्पार्क है विच क्लॉप नीड्स फ्रॉम द ट्रांसफर मार्केट कि भाई अभी ये आ गया तो टीम विल लुक सेटल्ड, टीम विल लुक बैलेंस्ड, एंड ही इज द की टू आवर आंसर्स? मैं आपको बोलूं वो एक स्पार्क चाहिए ही नहीं हमको, हमको वो काफी स्पार्क्स चाहिए इस टीम को वहां देखने के लिए कि जहां पे ये होना चाहिए, और यहाँ जहां तक हम अभी लिवरपूल को देखते आए हैं। तो मैं वाई एम आई सेइंग दिस, आप एक मिडफील्डर ले आओगे कल, ठीक है, और आप बोलोगे कि हाँ ही इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। या थियागो फिर से इंजर होगा ही, हेंडरसन फिर से एज करेगा ही, देयर इज जेम्स मिलर who's going to retire with the club, I'm sure। मतलब हमारे पास पता नहीं कौन कौन से बच्चे आगे खेलने लग जाएंगे, जेम्स मिलर इज गोइंग टू बी देयर, एंड आई एम नॉट mocking him, I love the guy, I think he's a legend, I think he was so good against Manchester City, and Yeah. against a team like that the experience comes in factor a lot, and that's what James Milner shows। and there is no way I am going to be an ageist here कि भाई अगर तुम बूढ़े हो गए हो तो तुम ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, it's nothing like that, we have seen Messi do incredible things at the age that he is in right now, so that is why। So yeah, Okay। this since the start of the season, Liverpool के सामने and Klopp especially की 7 season curse of Klopp which he faced at Dortmund as well. Like, is it just the Yeah। 7 season syndrome of Klopp or more? Because I remember seeing one of Nitika's your videos itself, saying the players are a bit fatigued after the intensity season after season after season.
But I think that's true because it's not the seventh season thing, but सोचो अगर सही टाइम पे सही प्लेयर्स लेके आए होते, अभी मैं बताती हूँ हावी एलियट जब खेलने को आता है ना, वो स्पार्क दिखेगा कि वो डर नहीं है यार, ठीक है, वो एक क्रिएटिविटी दिखेगी, तुम एक ही प्लेयर से कितना वो कितना कुछ निकलवाते बट रहोगे वो एट द एंड ऑफ द डू डे। यू थिंक कि क्लॉप नीड्स हम्म टू रीबिल्ड, मतलब वो रीबिल्ड वापस जरूरी है बिकॉज ऑफ द लाइक पूरा निचोड़ दिया स्क्वाड को, इफ आई मे से, लाइक हम्म मतलब द वे एग्जैक्टली। सिंस ही केम इन till now, and you also mentioned that every player has been utilized 100% or more than that हम्म 200%. So हम्म do you think, you know, younger players, or not if younger players, just new players are needed? हम्म I think that is the answer that we have been seeing on the pitch. Konate, when he plays, that he's the beast out there, and he is the one that we Yeah. bought in the previous transfer window, right? Then you look at Luis Diaz, then you look at Diogo Jota, then you look at Harvey Elliott, you look at Fabio Carvalho. I mean, these are the players. David Nunez को भी लगा लो यार, मतलब ठीक है उसको काफी ज्यादा brunt face करने को मिला था, but you can't like I think you can't skip the fact that he has been brilliant if you consider the number of minutes he has played for us. आधे टाइम तो बेचारा रेड कार्ड पे बाहर रहता है. So But we, that's what I'm. majority of the matches he has played in the Champions League where he has performed, where Salah has performed. Yeah, But वही same yeah. players Premier League Hmm, में वो उसी हफ्ते में, it's like a whole different team. Like we saw a comment that they are the Robin Hood of Premier League this season. hmm. जो सिटी से पॉइंट्स लेके नॉटिंघम फॉरेस्ट लीड्स को दे रहे हैं. And That's very well put. Yeah. yeah, but why, like the same week where you put in a 5-star performance in the Champions League, you Hmm, go on to put like anything a performance in the Premier League. I mean, obviously See. it could be the players' fatigue, but कुछ तो और Hmm. होगा back scenes में. मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लिवरपूल को ना थोड़ा एक वो हो जाता है कि एक आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल हियर लाइक एक बंदी ने ना बारी बारी धोखा दे रखा है या बंदे ने बारी बारी धोखा दे रखा है एंड यू गो बैक टू But देम अगेन एंड अगेन यार एक एक पॉइंट से सीजन आफ्टर सीजन हारना मतलब दैट तुम एक पॉइंट से कैसे रहते हो एक सीजन में बताओ अगर मैनचेस्टर सिटी इज विनिंग एंड यू आर लूजिंग जस्ट बाय 1 पॉइंट इन प्रीमियर लीग एंड यू नो द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड द परफॉर्मेंस यू विल हैव टू पुट अगर मैनचेस्टर सिटी नहीं होता वी वुड हैव won those Premier League, we would have been the champions. But that didn't happen because there was Manchester City. तो बारी बारी धोखा मिलते रहना and you are doing everything right. गलत क्या किया है तुमने? It's just that there is another student who has been brilliant as well. तो yeah, फिर से उसी चीज को उस वे में लेके आना वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं टूटेगी ही एंड यू कांट एक्सपेक्ट टू गो सीजन आफ्टर सीजन एंड एक्सपेक्ट द सेम सॉर्ट ऑफ इंटेंसिटी फ्रॉम द प्लेयर्स यार वो भी एज होते हैं सो दैट्स व्हाई रीबिल्ड बहुत ज्यादा जरूरी था लिवरपूल के लिए जो हमने सही टाइम पे नहीं किया अगर वो हुआ होता व्हाई डिड आई मेंशन द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स दैट वी हैव बॉट बिकॉज दे आर द ओनली वंस हु विल ब्रिंग सम स्पार्क इन द टीम because they're the only ones who can do something different than we have seen the rest of the team do because that's become very predictable. true. Okay, so let's just move on to the second part of the segment. Obviously, the match of one of the matches of the weekend, like Hmm. Spurs versus Liverpool, for what we have gathered here. Abhi, you see the contrast. Liverpool is not doing so well. Spurs are doing really well, and they got the rebuild. Malab, I think she logged off due to some network issues, so we'll just wait for her. So, Harsh Rathod, do you guys also discuss our Barcelona matches? Yes, Harsh, we do discuss our Barcelona matches, so do DM us. We will get in touch with you and we'll be happy to get you on soon. So, Hey, I'm yeah, sorry, I think I Nitika, I didn't was get just you. वो saying. थोड़ा network issue था, yeah. हाँ, तो मैं वो बोल रहा था अभी स्पर्स का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है प्लस द रीबिल्ड दे हैड इन द समर प्लस कॉन्टे स्टेइंग फॉर एन ईयर नाउ Hmm. एंड लिवरपूल्स कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म. Do you think this is going to be a really really tough match कि भाई वही है रॉबिन हुड, मतलब स्पर्स को हरा देंगे बट अगेन बैक टू जस्ट दैट थिंग कि ये वीक का ही कोटा खत्म हो गया. देखो मैं तो चाहती हूँ कि हम ये चीज करें रॉबिनहुड टाइप से अप्रोच यहाँ पे लगा लें वो मैं क्यों बोल रही हूँ देखो पिछले सीजन ना टॉटनम के मतलब साथ वो जीत ही जो आ दो जाएगी, मैचेस रॉबिन हुड तो रॉबिन हुड जीत तो आ जाएगी.
हाँ, चलो वो तो है, बट आप सोचो पिछले सीज़न में टॉटनहम के साथ जो हमने वो मैचेस ड्रॉ किए ना, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमको वो किया है। अगर हम वो मैचेस जीत जाते, वो जो पॉइंट डिफरेंस, वो लास्ट में वो एस्टन विला जेरार्ड वाला रोमांस जो इन्होंने पूरा स्टोरी लगाया था, वो सब नहीं पहुँचता, वहाँ तक आती ही नहीं ना नौबत, क्योंकि हमने वो मैचेस नहीं जीते। तो अब अगर टॉटनहम उस जगह पे है और हम हैं वहाँ से कि इनसे पॉइंट्स गिराते हैं, चाहे वो ड्रॉ ही क्यों ना हो जाए, आई विल बी हैप्पी विद इट। एंड क्यों ना हो, वी आर कॉन्टे की टीम है एंड दे हैव बीन इन सच गुड फॉर्म। हाँ, सॉन के साथ अभी मेरे को लग रहा है कि ना थोड़ा ही हैज टू गो अंडर द नाइफ बिकॉज द सर्जरी एंड ऑल, हेड इंजरी हुआ था, तो उनको थोड़ा लॉस है कि अटैक में प्लेयर्स कम है। Like he just Elroy also mentioned that Son ruled out till World Cup, a big blow या for Spurs. आई नो, आई मीन इस टाइम पे ऐसा इंजरी लेना, दैट्स क्वाइट सैड एंड आई फील बैड बिकॉज सॉन से काफी एक्सपेक्टेशन होता हमको एज एशियंस, कि थोड़ा मन होता उसको देखता कि यार वर्ल्ड कप में जाता वो खेलते हुए, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। तो उसका मेरे को दुख डेफिनेटली है, बट considering what we can do in this match, I think we can get the points here in this match. I am being like बहुत ज्यादा confident here after the performances that we put in Premier League. But I don't know कौन सा लिवरपूल उतरेगा उस दिन, मतलब how can I tell? How can I tell कि कौन सा लिवरपूल आने वाला है उस दिन? But a win is must, and it's good that we take points from them. True. I mean, if you see, like, I think right now each team is doing well in Hmm. their respective senses. Like, कोई ऐसी टीम है कि you can say कि भाई, like this is the team to beat. कि मतलब इन लोग को तो Hmm. हरा ही देंगे. Like, because you see Nottingham Forest, Yeah. everyone thought चलो Liverpool will easily beat Nottingham Forest. साला triple captain, सब हो रहा था मस्त एफपीएल में. All of a Yeah. sudden, मतलब नॉटिंघम फॉरेस्ट आके गोल मार के जीत रहा है. भाई So, सोचो and the एनफील्ड पे लीड्स 11 किलोमीटर्स आउटरन करती है लिवरपूल को। हैव यू एवर हर्ड सच अ स्टैट व्हेन इट कम्स टू लिवरपूल एंड दैट टू एट एनफील्ड? नो, इट्स Anfield, हैपनिंग। exactly. या So it's a season of surprises. You never know what you're going to get, and I think now managers have to double think stuff because of the World Cup coming in between the season and not हम्म at the end of the season, and हम्म players as well. क्योंकि हर प्लेयर को प्रूव करना है कि I need to go to the World Cup. Every हम्म player. So, and at the same time, they need to stay fit. Like now, you saw एग्जैक्टली। Son is out of the World Cup, Reece हम्म James is out of the World Cup, Ben Chilwell is हम्म possibly out of the World Cup. There are so many players who are out of the World Cup because of the injuries, या and I think that is why one of the reasons is Liverpool and few other clubs are suffering because of the bench हम्म strength. कि मतलब एग्जैक्टली। सब प्लेयर्स को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि और सब लोग 100% दे भी नहीं सकते if they are injured. हम्म And I हम्म think Spurs fall in that bracket as well. Like even with the rebuild they had, हम्म majority of the squad is limited. जो उनका first squad है वो बहुत limited है. And you हम्म see that every match the same team is coming. And Conte का मतलब गेम ही पूरा अलग है कि तुम लोग पूरा 90 मिनट्स डिफेंड करो चलेगा सिर्फ एक काउंटर पे गोल मारना है. But हम्म at the same time that requires lots of running as well. And I think एग्जैक्टली। though it would be an interesting match because Spurs versus Liverpool like two contrasting teams, but at the same time, two big teams or two smaller squad teams are going to be. So I think वो एक दो हम्म players ही spark ला सकते हैं and just for the win, any one player या can dominate the game. I feel. So who एब्सोल्युटली। do you think is that one player for Spurs who you are actually scared of now? अभी Son नहीं है तो. Um, I really get very scared from Ivan Perisic. Matlab, I don't know if he's going to start or if he's going to be there in the squad. I don't know, but he's a very scary guy because उसके assists वो जो सोचता है ना कि किस तरीके से वो कोई बॉल एज अ थ्रू बॉल मार के दे देगा या कुछ और, वो क्या चांसेस Hmm. क्रिएट करके देता है, कहीं ना कहीं दैट्स स्कैरी। बिकॉज अगर कुछ ऐसा थ्रू बॉल निकलता है, ऑलरेडी डिफेंस की धज्जियां उड़ी हुई हैं, तो कौन उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा? एंड आई कांट सी एलिसन बेकर अगेन लाइक ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस एंड ब्रिंग अस इन द गेम, सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी स्कैरी। ऑल्सो लूकस मोरा का मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है इज वेरी पेसी यार, वेरी वेरी पेसी। तो अगर उसके लिए भी कोई बॉल बन के आता है एंड ही आउट रन्स आवर प्लेयर्स विच ऑलमोस्ट एवरी टीम इज डूइंग नाउ, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा Yeah. स्कैरी सिचुएशन हो सकता है। तो दैट इज वेयर आई एम अ लिटिल स्केयर्ड अबाउट देम। तो दीज आर द प्लेयर्स जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कैन डू रियली वेल अगेंस्ट अस। Yeah, so Prasanna feels that now Kulusevski is back, and which is a He's really back? a I thought good. he's not.
So do you want to just replace your players? Because Kulusevski has been outstanding. Matlab, Yeah. you know that he is going to cut in from the Uh, left, but the and he's crosses which he's he very is scary when it putting in, comes with Harry Kane, Harry Kane के साथ उसका जो exactly, link up रहता है ना, that's going to be very scary for us. I thought he's not going to play. exactly. चलो. Uh, Bearer of bad news, Prasanna. So, but if you read the second part, two teams not playing great, difference being one getting points. I mean, ये ऐसा भी like ये सबको लगा कि सिटी मैच would be the turning point for Liverpool. Hmm. It Hmm. didn't turn out to be that. At the same time, अभी लोगों को लग रहा है कि Liverpool versus Spurs turning point for any one of them could actually kick off the season. But the Hmm. best part is after this only one game week is there before the teams head out to World Cup. तो Yeah. जो मोमेंटम बिल्ड हो भी सकता है I don't think Hmm. so is going to be worth it, but obviously it's a big match, so you have to go match to match, and it's Exactly. going to be a really great match as a neutral, especially. You already Yeah. have fans tuning in as well. I mean, Hi. it's Hi. just because IndyCop has become synonymous with Liverpool, especially Oh, in India at least. that's such an honor. That's such a sweet statement. Thank you so much. Yeah. So Romero out for Spurs. Yeah. Okay, ये एक अच्छी न्यूज आ गई है कि एटलीस्ट रोमेरो बाहर है, तो नहीं एटलीस्ट मतलब कोई अच्छी सलाह के न्यूज़ तो बाल क्या तो नहीं ही है। खींचेगा, मैं आपको कोई बता रही हूँ एटलीस्ट अच्छी सलाह न्यूज़ के तो क्या ही है, आप सोचो नॉटिंघम लीड्स के साथ जो 6 पॉइंट्स मिल सकते थे वो लिए नहीं है ना? और अभी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हम सोचने लग जाते हैं कि नाउ वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। मतलब वही है ना, इतना इनकंसिस्टेंसी वाला चीज़ चल रहा है ना, इनकंसिस्टेंसी इज़ वन थिंग दैट वी नीड। तो इवन इफ वी विन दिस वन, I don't know which Liverpool is going to come on next. So that's why I'm very happy that World Cup is going to be there and वो थोड़ा mind change करेगा, थोड़ा refresh होंगे सबके सब, especially Liverpool fans, and then we'll see what happens then. I mean, Seth says that Kulusevski will be pocketed by Robert Duvenfori guy. At Yes. least good to see कि कोई तो confident है, लोग confident है लिवरपूल में. That's very nice. I, मतलब मेरे को अच्छा लगा सुन के, मतलब it's nice. भाई चेल्सी के हमेशा लिवरपूल फैंस के कम इग्नोर करते हैं. जब तुम लोग ट्रॉफी लेके जाते हो ना पेनल्टीज में, ऐसे ही होने वाला है. ट्रॉफी छोड़ दो जरा पेनल्टीज में. हर मैच वो पेनल्टीज में वो गया दिन लास्ट भी 2-3 सीजन. वो दिन भी क्या दिन थे ऐसा लग रहा है। अब कहाँ तक पहुंचेंगे we don't know. Exactly. So, now obviously we talked about Spurs versus Liverpool as well. And you have mixed feelings, but at the same time, you are confident enough to guess a Liverpool win, I'm hoping. So, what are Hmm. your prediction, like the score line for the match? See, स्पर्स में वहाँ व्हाइट हार्ट लेन में मैच हो रहा है and I'm going to say that I want to say a very like एक win बोलना चाह रही हूँ मैं, लेकिन वो मुंह से निकल नहीं रहा है because I don't know which team is going to turn up यार, I have no idea सही में it has become so inconsistent that now that even I think about it कि यार हम ऐसे करके ऐसे खेलेंगे and this is how we are going to win, it just doesn't work anymore. So I'm just going to say that I'll be happy with the 1-1 draw as well, but अगर 2-1 हो जाता है लास्ट मिनट पे हम गोल कर देते हैं and we win the match, I'll be happy with that. So, Said is very confident and वो भी clean sheet के साथ 3-0 win, 2 2 Salah, 1 साला 1 United. unit, वाह, if that happens now I'm Just telling for you. this, like people are more confident on Spurs losing rather than Liverpool actually winning. That's true, I mean, that's true. ये actually हो सकता है. Like the Yeah. team which Spurs come out with, like they could be their own, like downfall. Who knows कि क्या होने वाला है मैच में. Lucas Exactly. Moura is in Trent Alexander pocket. Kane in ये बढ़िया pocket ये बोलते थोड़ा थे ज्यादा हो नॉर्मल गया फैन यार, है. ये थोड़ा ज्यादा हो गया, don't do वो that. Said is like just hyping Liverpool up right now, like it would like all Liverpool fans did a couple of seasons ago. सही, I And really want to ask you कहाँ से आप इतना पॉजिटिविटी लाइफ में लेके आते हो, because trust me when I'm watching the match I'm like पूरे बाल वाल मेरे हाथ में आते हैं, what are you guys doing, like it's so inconsistent man, but I'm happy that there are people who are that positive even now. yeah. So last question, like how are you planning to watch the match? Like कुछ special ritual है, especially for such big matches. And if you all do win, कुछ ऐसा after party plans.
See, it always happens with me. Like जब भी कोई मैच होता है ना उससे पहले आई एम ऑलवेज वेरी प्रिपेयर्ड कि मेरे साथ ना एक तो आई लाइक इट कि कुछ भी ना आसपास नहीं होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एंड आई एम सिटिंग एंड आई एम वाचिंग द मैच। एंड देन जब वो एक मोमेंटम अच्छा पकड़ते हैं ना, आई नो कि वी आर विनिंग द गेम। जब स्टार्ट ही नहीं अच्छा करते ना, फिर मुझे पता था अब ये कुछ नहीं करने वाले, एंड देन आई ट्राई माय बेस्ट कि प्लीज प्लीज थोड़ा ढंग से खेले, एंड व्हेन वी विन इट देन आई जस्ट turn on the camera and I record the video immediately. I think that's my go-to thing to do, just to discuss Yeah. my whatever ideas that I have. चाहे मैं गुस्से में हूँ, अगर मैच हारते हैं तो I just do it on the screen कि this is what I'm feeling. तो many a times it happens कि मैं अपना वीडियो जब वापस जाके देखती हूँ, then I realize shit यार मैं इतने गुस्से में थी, shit यार I was that happy, मतलब that happens with me because I ये just एक्चुअली immediately होता है go in like the camera. many times like as so obviously I'm a Chelsea fan and Prasanna is also a Chelsea fan. Like many Hmm. times he has messaged me कि भाई तू आ जा, let's just rant whatever's there after the match. Like I don't feel that confident to go on screen, especially after a win. Like obviously I'm Hmm. happy, but I think वो जो Yeah. अंदर की भड़ास होती है वो games की to get out the frustration is very important, regardless of how it comes out and when you watch it later. So, Prasanna, in case Chelsea Arsenal, I mean, we know we have already spoken about it. Most probably, I'm going to be in to come on a channel again. So, I'll ask the Chelsea का तो एक तो अलग ही scene चले जिधर Arsenal for some reason, however bad their form in, they managed to beat Chelsea. So hopefully they अब तो don't. अच्छे फॉर्म में, अब देखो क्या होगा। इसलिए आई एम लाइक स्लाइटली कॉन्फिडेंट कि मतलब थोड़ा अच्छा उल्टा हो जाए कि वो लोग हम लोग को पॉइंट्स दे रहे हैं होपफुली। अच्छा यार, करो जिसको जो करना है करो, हम वहां पे देख ही नहीं रहे, हम अपनी अलग लीग में है। Yeah, true, true. So, Nitika, Indicop, thank you so much for coming on. And you know, it was slightly a short notice, but I'm glad we did this episode. काफी मजा आया सीरियसली, करने के लिए। अरे थैंक यू फॉर And कॉलिंग मी। ऐसा था ना कि ऑलरेडी सो बिजी इन लाइफ, तो सडनली कोई ऐसे बुला लेता है तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एंड यू गेट बैक टू फुटबॉल एंड देन यू वांट टू रिकॉर्ड योर ओन वीडियोस एंड गेट बैक टू इट। बट आई एम हैप्पी दैट आई वाज yeah, हियर, इट वाज अ वेरी डिफरेंट चेंज एंड so इट we वाज अ are वेरी waiting फन for your चैट। videos. We are waiting for your videos, regardless of the Liverpool results. But obviously, everyone is already waiting. All the Liverpool fans are waiting for it. So thank you so थैंक much यू। again for coming on. And obviously, our viewers who were commenting actively, who are liking it, but don't forget to share it with your friends as well, who can comment, and hopefully we'll be able to reply to all of them later on. And Also, do give best your of luck to predictions, your guys, in the comment section. Now, we will love to know what you think. Like, exactly. किसका सही जाता है prediction? That'll be nice. मेरा, by the way, 2-1 है in favor of Liverpool, obviously. So, by the way, I didn't ask you, Vineet, what's your prediction? I'll just answer it before that. Confidence comes from Ustad Mosala and endless trust from Klopp's sister. That's there. Wow. So he answered your question from where the confidence comes in. Yeah. और मेरे को लगता है I really want Liverpool to win. I mean I Ah, don't, but by Spurs के against I want any other team to win. That's there. So I think I'll take it. Yeah. Liverpool. I think I'm going to stick with the same scoreline of 2-1 and Liverpool just nicking it. I just feel that it's going to be 2-0 and then Spurs trying to push back to equalizer. अरे But नहीं, Spurs is going to score first. Like, that's what we have been doing. So that's the narrative for sure. but They'll score first, and मेरे को लग रहा है कि it's going to be like the same Liverpool City scenario where Liverpool just go all out and too much to handle for Spurs. But let's see क्या होता है. let's see. That's the And beauty of it. Sunday, It's so unpredictable. exactly, exactly. So that's it, everyone. Thank you so much for tuning in. Don't forget to subscribe. And obviously, like I mentioned, start of the episode, IndieCop's channel link is given in the description. So do check it out as well. And have a good night. Have a great weekend ahead. Thank you. Bye, guys. Bye. Thank you for tuning in. Bye.